So now the thing is that what the test takers demand, जेके असां वटि टेस्ट टेकिंग एजेंसीज़ आहिनि जीअं SPSC थी वई या जेको आहे सिखर IB यूनिवर्सिटी थी वई या फेडरल थी वई, what do they demand from us? And as per some of the professors at Sikhar IB University, they said that MCQs is a test which is taken by blind and given by blind people. माना ये अहिड़ी टेस्ट आहे जेका अंधा ॾियनि था ऐं अंधा ई जेको आहे न वठनि था. So why he said these words? These words are the words of Professor Ghulam Hussain Manganar sahab. Because उनजे मुताबिक़ इहा टेस्ट आहे त बाबा ठीकु आहे तव्हां जेको आहे धुका बि लॻी वेंदा ऐं समटाइम्स तव्हांखे माना रटो लॻियल जेको बि कमु थी वेंदो आहे. So it's not a good way to take the test from the people. जेको शयूं असां वटि माना ट्रेडिशनली हलनि थियूं, पर पोइ बि असांखे त उन ट्रेडिशन सां हलणो आहे, असांखे उनजे मुताबिक़ पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर करिणो आहे. बट इट्स नॉट अ गुड वे टू चेक द competitive candidates in a particular test. It's not a good way. MCQs में माना मुझो पंहिंजो इहो एक्सपीरियंस आहे त माना बिस्मिल्लाह करे रटा आणी वञो and you can get good marks. So it is possible. It is possible. जेकॾहिं असां हिन में को अहिड़ो सब्जेक्ट खणूं जंहिंमें मूंखे को फार्मूला सम्झ में नथो अचे, मां फार्मूला जो ॾाढो रटो आणियोसि ऐं मां एग्ज़ाम में वेठोसि ऐं मां उहो क्वेश्चन सही करे आयुसि. इट मीन्स आई डोंट नो मैथमेटिक्स, बट पर मां थोरो घणो शयुनि खे ॾिसी वियुसि ऐं कमु थी वियो. So dealing with these questions and these tests is not a big deal. इन्हनि सां डील करण को वॾो मसइलो कोन्हे जेकॾहिं असां थोरो प्रॉपर्ली उन्हनि शयुनि खे जेको आहे मैनेजेबली टाइम ॾियूं त. Okay, so this was our short discussion that what will be our pattern to discuss these all the things. Now let us go towards a general discussion that how can we prepare about these exams. Since the exams are not subjective, माना को subjective paper न हूंदो आहे जंहिंमें तव्हांखे question ॾींदा बाबा prove this particular thing या solve this integral, अहिड़ो कुझु न हूंदो आहे. Only they are checking our fundamental knowledge of mathematics. So उन में असांखे कहिड़े हिसाब सां प्रिपेयर थियणु घुरिजे ऐं असांखे जेको आहे न माना पंहिंजे माइंड खे कहिड़नि MCQs जे लाइ सेट करणु खपे. This is the main thing and we are going to discuss this thing for maybe next 10 to 15 minutes. So I'm not going to waste your time, but this discussion would be a bit fruitful. First thing is that what type of questions can we predict that they are going to be part of any type of MCQs test which is related to BSc or MSc level mathematics. So this discussion will help us to study the things in a good way. So simply types of MCQs. This is my own perception. Maybe this might differ from yours. In a perception and तव्हांजी पंहिंजी perception में फर्क थी सके थो. There are some questions or MCQs which are only based on some sort of common sense. Common sense means you are going to appear a test which is subjected to the people who have done MSc or some sort of other things. पर टेस्ट में अहिड़े क़िस्म जो कॉमन सेंस आहे त जेकॾहिं तव्हांखे 8 खां 10 जी लेवल जी मैथ अचे थी, then you can do those things. So there are some questions. You know that तव्हांजी पूरी टेस्ट न शइ ते बुनियाद हूंदी, but there are some questions in the test, maybe 2, maybe 1, maybe 5, maybe 10, maybe more than that, which are only based on common sense. So जेकॾहिं असां थोरो माना इहा शइ उते यूज़ कयूं, then we can deal with those things easily. Let me give an example of this thing and you will realize by yourself. So simply let's take a number which is 10 power 32 plus 2, and when m is divided by 11, the remainder is what? So we have a number
which is 10 power 32 plus 2, and we are going to divide this number by 11. What should be the remainder? And पहली ॻाल्हि इहा आहे त हिन नंबर खे असां सॉल्व कयूं, 10 जो 32 पावर कढूं, माना 1 लिखी असां 32 ज़ीरोस ॾियूं, ऐं पोइ असां हुन में 2 ऐड कयूं, ऐं बाद में हिन नंबर खे असां 11 सां डिवाइड कयूं, 4 रिमाइंडर अचणु खपे। माना इहो त आसानी सां असां करे सघूं था, बट वी कैन यूज़ सम सॉर्ट ऑफ अदर सेंस टू डू इट इज़ीली। हाणे हिन में का असांजी कैलकुलस यूज़ नथी थिए, इवन ही नंबर थ्योरी जो क्वेश्चन आहे, ऐं नंबर थ्योरी तव्हां यूज़ कंदव त जल्दी थी सघे थो, बट उहो बि कुझु कॉम्प्लिकेटेड थी वेंदो। पर हिन में जेकॾहिं असां थोरो पंहिंजो कॉमन सेंस यूज़ कयूं त इहा शइ जल्दी थी सघे थी। सभ खां पहिरियों असां हीअं था कयूं, 10 जो पावर 0 खणूं था, व्हाट शुड बी दिस आंसर? 3। अच्छा, 3 खे मां 11 सां डिवाइड कयां, रिमाइंडर छा ईंदो? डिवाइड ही न थींदो त माना रिमाइंडर 3 ही आहे। एंड लेट्स से 10 पावर 1 plus 2, what is this answer? 10 power 1 plus 2, 12, and 12 के 11 सां डिवाइड कयूं, रिमाइंडर छा ईंदो? 1 ईंदो। 10 power 2 plus 2 would be 102, and remainder when divided by 11? 3. You can see the pattern. पैटर्न हिकिड़ो जनरेट, हाणे तव्हां जेकॾहिं नेक्स्ट हिते पावर 3 रखंदव त तव्हांखे रिमाइंडर घणो मिलंदो? 1। सो 3 1 3 1। हाणे तव्हां इहो ॾिसो, इफ द पावर इज इवन 0 2, रिमाइंडर घणो थो अचे? 3 थो अचे, ऐं आड ते पावर घणो थो अचे? 1 थो अचे रिमाइंडर। सो ही पावर छा आहे? इवन आहे, त रिमाइंडर छा अचणु खपे? 3। दैट्स ऑल। So in some questions we can deal in this way, which is very easy. माना असां अहिड़े क़िस्म जा questions कंहिं बि टेस्ट में एक्सपेक्ट करे सघूं था, but sometimes these questions might be time taking, sometimes not always. So we have to be prepared for these questions as well. हाणे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो क्वेश्चन असांखे टेस्ट में अपीयर थिए थो, and simply we don't have that much time, त पोइ माना इहे questions doable हूंदा आहिनि, but sometimes they waste time, because sometimes you don't know कि माना ट्रिक कहिड़ी अप्लाई थींदी, पर उहे questions doable हूंदा आहिनि। इन्हनि शयुनि खे असां करे सघूं था, ऐं असां अहिड़े क़िस्म जा क्वेश्चन्स पंहिंजी टेस्ट में एक्सपेक्ट करे सघूं था। पोइ थी सघे थो 1 सुवाल हुजे या 5 हुजनि या 10 हुजनि। And maybe the second type of question that I can assume is the questions that are based on direct calculation, but in calculation you need some sort of formula. माना ये उहे questions आहिनि जेके असां मोस्टली टेस्टनि में जेको आहे न फेडरल में ॾिसी सघूं था या ॿियनि टेस्टनि में, बट मोस्टली आई थिंक सिकराई यूनिवर्सिटी में अहिड़ा सुवाल हूंदा आहिनि, पर घटि। इहो डिपेंड करे थो उन्हनि टेस्ट ते। So there is a very simple example. I have 2 power x, y is equal to 2 power x, then what is going to be the value of dy by dx? It's a simple question. हाणे हिन में छा आहे त असांखे फॉर्मूला ख़बर हुजे बस। इहो त सिंपल आहे, त जेको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आहे उनजो डेरिवेटिव छा थींदो आहे? So this is your derivative, 2 power x, and log of the base is going to be multiplied. But what if you don't know this formula? Sometimes it happens that you don't know. पोइ असां माना इहा ग़लती करे सघूं था जेकॾहिं असांजी थर्ड अंडरस्टैंडिंग शयुनि जी न आहे त बाबा ठीकु आहे, डेरिवेटिव में पावर एच ईंदो ऐं पावर 1 माइनस थींदो। इट्स नॉट द थिंग, इट्स नॉट द थिंग। ऐं कंफ्यूजिंग पॉइंट कहिड़ी हूंदी आहे? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स तव्हांखे ॾींदा आहिनि पाई पावर एक्स ऐं x power pi, x power pi. Yes, sir. Now this is an exponential function, Yes, sir. because the variable is in the power, Power. but this is simply Algebraic. an algebraic function in which you can apply the power rule. Yes, sir. छाकाणि हिन में पावर असांजो रेशनल हुजे, इंटीजर हुजे या नेचुरल नंबर हुजे, we can apply power rule. माना हिन जो जेकॾहिं तव्हां डेरिवेटिव कढंदव, it would be pi x power
pi minus 1 पर लेकिन है ना डेरिवेटिव करना से this remains same multiplied by log pi. But depends upon whether you know this formula or not. For this exponential function, what if you don't know? Taking L on both sides. Taking log both sides and again Taking log both sides. Sometimes जेके नता exact formula खबर ना है and maybe किए थी नो वाला formula असांखे खबर था but we are missing one point के बाबा log 2 में अले multiply थी नो अले divide थी नो. yes sir. So sometimes this happens. So ता ने कि जेके log mini side वठी को differentiate करो then you can do it in this way as well. So these are the questions which are based on direct calculation, but for this sometimes you need formulas, and if you don't know then simply it will disturb us. And maybe you have this question 1 plus I or iota whole power 20. 20 के असां जेकॾहिं expand कयूं there will be 21 terms as per binomial theorem. मान लीजिए power n होजे the terms वो n plus 1 थींदा आहिनि. So in the direct expansion करना से it will take a lot of time. But we can apply some tricks here so that the same question might take a few seconds to be solved. वो असां हिन खे कीअं लिखी सघूं 1 plus I whole square and raised power 10. 10. Yes sir. हाणे तव्हां स्क्वायर में जो आसानी सां छॾाए सघो था पोइ इहो तव्हांजो माना कुझु कट सट थी वञे हिकिड़ो टाइम बचंदो Yes sir. 2 ऐं हिकिड़े टाइम ते तव्हां केतिरो पावर ॾियो. Yes sir. It's not a big deal, you can do it. And sometimes in some tests, the questions that you might get, which are directly based on formulas or identities or equations, या माना वो directly cramming ते depend करे थो. उनमें माना तव्हां ईअं नथा माना चई सघो त बाबा ठीकु आहे हिन में मां का कैलकुलेशन कयां ऐं मूंखे जवाबु मिली वञे. इट्स नॉट पॉसिबल. माना कुझु डायरेक्ट फॉर्मूलाज़ हूंदा आहिनि उनखे यूज़ करणो पवंदो आहे. पर जेकॾहिं तव्हांजी एडवांस अंडरस्टैंडिंग कोर्सिस जी सुठी हूंदी त पोइ बि तव्हांखे जेकॾहिं फॉर्मूला एक्ज़ैक्टली यादि न आहे then you can just predict the right guess for that particular option. For example, so these are the questions. Let me call this number 3. These are the questions which are based on some sort of formulas or any particular idea. And let me give you an example of this question. So I am calling this V to be an inner product space. या शइ असां फंक्शनल में पढ़ंदासीं त हिन जो मतिलबु छा आहे ऐं जॾहिं बि इनर प्रोडक्ट जी ॻाल्हि अचे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां का इनर प्रोडक्ट डिफाइन कंदासीं त छा थींदी बाबा का हिकिड़ी इनर प्रोडक्ट आहे that takes values from this particular space cross V and gives us values in the complex numbers or real numbers. ये शइ बाद में लिखी वेंदी ऐं असां चऊं था त हिन स्पेस में के ॿ वेक्टर्स बिलोंग कनि था. Then simply which one of following is correct? Number 1 is V1 and V2 जी inner product जो असां जेकॾहिं absolute value कढूं it is going to be greater than norm of V1 times norm of V2, and the second option is V1 V2. इनके फिलहाल समझने की अंडरस्टैंड माना जरूरत कोने, but I am giving you just an idea. So this is going to be greater than norm of V1 plus norm of V2, and for me third option is V1 V2 and less than or equal to norm of V1 times norm of V2, and last option is this norm of V1 plus norm of V2. So which one is correct? हाणे इते असां जेको आहे न का कैलकुलेशन भी यूज़ नथा करे सघूं, कंहिं क़िस्म जो कॉमन सेंस भी यूज़ नथो थी सघे ऐं अहिड़ी का भी ट्रिक भी नथा अप्लाई करे सघूं. If you know the things, we know the things. If you don't know the things, simply we don't know. हाणे अहिड़ा क्वेश्चंस तव्हांखे कुझु टेस्टनि में थी सघे थो माना 50 अहिड़ा क्वेश्चंस मिली वञनि. Sometimes it happens, as I have seen some tests taken by NTS. उन माना तव्हांखे 50 में अहिड़ा क्वेश्चन मिलिया 70 मां या 100 मां, ऐं सिंपली तव्हांखे अचनि था त सभु सही थी वेंदा, नथा अचनि त
सिंपली माना चई सघूं था धोखा लॻा था ठीकु आहे न त सभु ग़लति थी वेंदो. So these are the questions which are totally based on formulas. This is basically Cauchy-Schwarz inequality, and correct option is this. The V1 and V2 जी inner product के जेकॾहिं असां उनखे absolute value में रखूं छाकाणि त inner product ॿिनि numbers जी या ॿिनि vectors जी sorry it is going to be a real or complex number. And for example here inner product हिननि numbers जी for example complex number थो अचे त complex number में तव्हां order कॾहिं बि define करे सघंदो तंहिंजे करे ही absolute value वठणु लाज़मी आहे. इन जो रुगो इहो मक़सदु न हूंदो आहे त बाबा ठीकु आहे त नेगेटिव मिली वियो त absolute value में पॉजिटिव थी वेंदो. The main thing is that this space में जेका inner product आहे it takes values from this and it can give us the number to be complex or real. In a sense में कंहिं बि complex number खे तव्हां कंहिं ॿी शइ सां compare ई नथा करे सघो because you know very well the set of complex numbers is not in ordered field. Ordered field जो मतिलबु इहो आहे त 5 iota हुजे तव्हां ईअं कॾहिं नथा चई सघो sorry that 5 iota is greater than iota नथा चई सघूं असां ठीकु आहे. So हिकिड़ो इहो बि सेंस आहे and this is going to be less than or equal to norm of V1. V1 जो norm माना V1 vector जी length खे असां जनरलाइज कंदा आहियूं हिन norm सां and V2 जी length हीअ थी वई. This is called Cauchy-Schwarz inequality and जेकॾहिं उहा शइ असांखे यादि आहे त असां करे सघंदासीं जेकॾहिं यादि न आहे त simply we can't do it. ऐं माना हिन में इहा कीअं ख़बर पए त वाकई हीअ शइ हिन खां नंढी थींदी या वॾी थींदी. ही ॿई ऑप्शन्स त सिंपली जेको आहे न असांखे ग़लति था लॻनि. रीज़न इहो आहे जेकॾहिं Cauchy-Schwarz inequality असांजी माना नज़र मां गुज़रियल आहे त हिते बि प्लस पई आहे हिते प्लस पई आहे. These two options are wrong. हाणे माना असांजो माइंड हिते बीठो आहे त बाबा या 1 सही आहे या 3 सही आहे पर असांखे एक्ज़ैक्टली फॉर एग्जांपल माइंड में क्लिक नथो थिए त whether this one is right or this one is right, then what should be done? Nothing. Acha, we know one thing I think. What is that? Dot product. Changa norm of V1 times norm of V2. No, it is this. V1 and V2 जी inner product जेका आहे उहा हिन जे बराबरि ईअं ऐं हिन शइ खे असां खणी करे cos theta जो वैल्यू कहिड़नि ॿिनि वैल्यूज़ जे विच में हूंदो आहे. We know very well cos theta takes the value greater than -1 but less than 1 पर जेकॾहिं हिन शइ खे असां absolute value में हिनखे मथां ॾिनो आहे हेठां न ॾिनो आहे. हेठां हिनखे ॾिनो छाकाणि ही ॿई शयूं ऑलरेडी पॉजिटिव आहिनि सो जेकॾहिं हुनखे ॾिजे या न ॾिजे को फ़र्क़ु नथो पए. हाणे ॿुधायो त cos theta जे absolute जो वैल्यू मैक्सिमम 1 हूंदो ऐं 0 खां वठो माना जेका हीअ क्वांटिटी आहे हीअ जेका बि क्वांटिटी आहे या त इहा 1 जे बराबरि हूंदी या हिन खां लेस हूंदी ईअं ई हूंदो न छाकाणि त ही क्वांटिटी बराबरि आहे cos theta जे. And we know very well cos theta जो जेको absolute value आहे that takes maximum value 1 less than 1 as well. So हाणे जेकॾहिं असां हिन क्वांटिटी खे हेॾां खणी वञूं मल्टीप्लाई कयूं then I think we'll get this option. हिनखे तव्हां इग्नोर कयो and you take this quantity multiply it over here then you will get third option. So माना जेकॾहिं असां हिन Cauchy-Schwarz खे हिन शइ सां कनेक्ट कंदासीं then we can do the things as well. माना इहो सिर्फ़ु इहो आइडिया आहे त असांखे ख़बर नथी पए त हिन 1 and 3 मां कहिड़ी करेक्ट आहे then we can do this. And this is I think the thing that saves our time as well as MCQs जेको simply अखर मां निकिरे थो उन में confirmation थी वई that's going to be correct. This thing is valid for all the spaces that you have, but this thing is only valid for those spaces in which you can define the angles. ज़ाहिर ॻाल्हि आहे एंगल तव्हां R2 में डिफाइन कंदो R3 में R4 हुजे ॿियो को कॉम्प्लिकेटेड स्पेस हुजे उन में तव्हां एंगल कीअं डिफाइन कंदो. एंगल त माना जेको असांजे स्पेस में शयूं आहिनि उन्हनि जे लाइ डिफाइन करे सघूं था
हाणे इन जो मतिलबु आहे त फॉर R2 and R3 this works, पर जेकॾहिं मां हिन इनर प्रोडक्ट स्पेस खणा ई को ॿियो थो त पोइ हुते फॉर एग्जाम्पल f belongs to this a function space, then this particular inequality holds, but this thing is not true for that. So ये शयूं वरी अॻिते जी असां डिस्कस करे वठंदासीं when we are coming to function analysis. Okay, so there are some questions which are directly dependent upon definition. उनमें तव्हां हीअ बि शइ यूज़ नथा करे सघो, लाइक हिते असां थोरी लॉजिक अप्लाई कई सो ठीकु आहे हीअं थी सघे थो, बट देयर आर सम थिंग्स in which you cannot do any particular logic like that. If you know the definition, you know the definition, and you can do it, otherwise not. For example, questions based on definition. So example is that f belongs to some C2 class of functions. C2 class means continuous and 2 times differentiable functions, and such that I should write it not f but u. Partial 2u by partial x2 plus partial 2u by partial y2 equals 0. Then u is what? Number one, it is like Laplace function and harmonic function. Number three, it is biharmonic function, and let's say number four is entire function. So इहा शइ डिपेंड करे थी त जेकॾहिं असांखे डेफिनेशन ख़बर आहे त बाबा अहिड़ो को फंक्शन जेको हिन क्लास सां बिलोंग करे, माना हुनजा जेके सेकेंड डेरिवेटिव्स आहिनि उहे एग्ज़िस्ट कनि ऐं कंटिन्यूअस हुजनि ऐं उहो हिन इक्वेशन खे बि सेटिस्फाई करे, देन दिस पर्टिकुलर यू इज कॉल्ड व्हाट? Laplace. लेप्लास कीअं? हिन u खे असां हार्मोनिक फंक्शन चवंदासीं. असुल ॻाल्हि इहा त हले त u छा आहे, तव्हां जेको लेप्लास सां रिलेट कयो उहो हिन इक्वेशन सां रिलेट कयो, ठीकु आहे. So this equation is Laplace equation, but the function that satisfies this equation is called harmonic function. So in this question you just need to know the definition. So there are some questions which are solely dependent upon the definitions. So अहिड़े क़िस्म जा questions बि असां जेको आहे न expect करे सघूं था पंहिंजी वजह से. Let me write the last one. So questions that can be solved by POE means process of elimination, and this is very powerful method. So the E values means eigenvalues in short of the matrix, and let the matrix be a diagonal matrix, not diagonal but lower diagonal, and 3, 7, 1 or what? Number 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3. 1, -2, -3. 2, 7, 1. 2, 3, 2. So जेकॾहिं असां हिनखे सॉल्व करण ते वेहूं, हिन जा आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कयूं बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सम अदर मेथड्स, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. पर जेकॾहिं हिन में असां का ट्रिक अप्लाई कयूं, देन वी कैन डू इट इजीली. So what should be done? हिननि खे डिस्कस करण जो मक़सदु इहो आहे त कहिड़े क़िस्म जा क्वेश्चन्स असां एक्सपेक्ट करे सघूं था. इट्स नॉट रिलेटेड टू बाबा असां आइगन वैल्यूज़ पढ़ी छॾियो कि हाणे असांखे सम्झ में न आयो. We'll be discussing this when we are going to start
discussing linear algebra. So, what should be the answer? 1 या 4. 1 या 4. And so, इतना खबर पड़ी वही that you know something about these. इतना हमारा बता option directly. And they say, अच्छा होगा you choose. First of all, yes, product of e values. This sign जका या product like used in here. So product of e values is equal to the determinant of matrix. Product of eigenvalues is equal to the determinant. Pairing out the हिन matrix जो determinant कीअं कढिजे जेको तव्हां आसानी सां कढी सघो था पर matrix जे कॾहिं diagonal आहे या lower diagonal आहे या upper diagonal आहे त सिर्फ diagonal entries जी multiplication कयो 2 times 3 times 1 that's going to be 6. So the determinant is 6. And pairing out the हिननि मां कहिड़नि जी product 6 थी थिए छाकाणि असांखे ख़बर आहे त determinant is equal to the product of e values. This symbol is used for product. त हिते मां product खे short कीअं कयो product of e values. So जेका हिननि जी product ॾिसो 2 times 1 14 14 times 1 14 जेका उन बराबर 9 2 times 3 6 6 times 2 12 या बराबर 9 पर हिन जी product भी 6 थी थिए हिन जी product भी 6 थी थिए. Now the question is whether option 1 is correct or 4 is correct. 4 is correct. And reason? I think addition of the Yes. The second thing is that when you add all the e values, the sigma is used for summation, then that is equal to the trace of matrix. TR of A means trace of A, and trace का मतलब होगा the sum of diagonal elements. Diagonal element जो sum गणो 2 plus 3 5, 5 plus 1 6. और हिने जो sum 6 न तो थे, हिने जो sum 6 है. Yes. So This will be correct. this is the answer. पर I think जेकरे मैट्रिक्स असां जो डायगोनल हुजे या लोअर डायगोनल हुजे या अपर डायगोनल हुजे त उन जो डायगोनल एंट्रीज ई वैल्यूज हूंदा आहिनि. Yes, sir. डायगोनल एंट्रीज आर 1 2 3 ई वैल्यूज. बट फॉर अदर मैट्रिसेस जेको डिटरमिनेंट ऐं ई वैल्यूज वारो ही जेको ट्रेस वारो कांसेप्ट आहे इहो ओके आहे. पर जेकरे डायगोनल हुजे त पोइ त जड़ो ई कोन्हे. Diagonal ते 1 भी पियो आहे 2 भी पियो आहे 3 पियो आहे. This is your answer. So if you go to the calculation, it will take lot of time. जेकॾहिं असां हिनखे वेही करे सॉल्व कयूं by formulating the characteristic equation, then it will take lot of time. So according to my perception, these are some of the question types that we might expect when we are going to appear in any type of examination. entire function. Entire function, that is, I think, analytic in whole complex plane. For example, e power z and sin z, cos z, z square, all the Special one. polynomial type functions. These are entire functions.